Today we discuss some of the issues, some of the questions of the drug and dyes. So, in that first is the digestion. Digestion is the one of the most vital function of the body, one of the most important function of the body. So, in this process, we will get the energy. Okay, the process is toughest process in the conversion of the food into the energy. In this process, start from the mouth and end with the anus. So in this process, firstly, we will take the food. Okay, we will take the foods from the body, from through the oral route, and it enter into the stomach, where the process of digestion start. After digestion, it passes into the intestines, where absorption process is taking place. Then through the intestine, it enter into the large intestine, then through the anus, and it material. So this process same for the medicine also. So medicine also is, we take the medicines to treat the any diseases. Okay, and the drugs are the chemical substances which are used for the required pharmacological actions. So when we take the medicines, it enter into the body through the oral route, where it digests, and then it reaches to the intestines through the blood. It reaches to the required place. So here are the some functions, that is the absorptions. How will it get in? Okay, will get in through the oral route. Then metabolism process is start into the liver. Okay, metabolism of the drug is start into the liver. It is break down into the smaller one, that is the metabolism started. Complex molecular structure break down into smaller molecular structures. Then distributions, where will it go, means required साइट, जैसा कि जो साइट पर आपको रिक्वायरमेंट है, where requirement of the drug is there. Okay, so pharmacokinetics in the principle of the ADE. Then the distribution of drugs takes place, means the, if we are taking the drugs for the hypertensions, then the required sites, generally hypertension is associated with the blood pressures. Okay, so relief should be there for the blood pressures. It reaches to the intestine, small intestines, livers. Okay, so the medicines we are taking, it reaches to the various parts of the body, where at the last end it reaches to the excretion, that is to the kidney. Okay, where excretion of the drugs takes place. If you take the harmful drugs, okay, it will affect the kidney also. Means some of the drugs, that is painkiller drugs are the more pronounced as a penetrating or the damaging drug to the kidneys. So सर in this way, drugs are, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. okay, okay. Once again, I will share the screen. Is it visible now?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम जो है ड्रग्स के बारे में देख रहे थे, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शंस, ओके, डाइजेशन किस तरह से होता है बॉडी के अंदर, वो बारे में हम आज देख रहे थे। ड्रग एंड डाइस का लेक्चर है हमारा। तो जनरली जो ड्रग्स का डाइजेशन है स्टार्ट होता है माउथ से, ओके। माउथ से स्टार्ट होने के बाद वो जो है उसका फर्स्ट स्टेप दैट इज एब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस, यानी ब्रेक डाउन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके फर्स्ट स्टेप में उसका रिएक्शन मेटाबॉलिज्म जो एक्टिवेट होता है, ओके, इट इज ड्यू टू द लीवर फंक्शंस, देन it reaches to the stomach, okay, where it get activated, then it is enter into the intestines also, where distribution of the drugs through the blood taking place. Blood reaches to the various parts of the body. It reaches to the receptor for which it is taken. For example, if you consider the one of the medicines for the hypertensions, ओके, हाइपरटेंशन के लिए कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो लेने के बाद उसका रिक्वायर्ड टाइम रहता है 1 से 2 घंटे के बीच में, वो जो है मेटाबोलाइज होकर ब्लड में मिक्स होकर रिक्वायर्ड साइट तक पहुंच जाती है। अब रिक्वायर्ड साइट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर वो थेरापेटिक एक्शन देती है, लेकिन पहुंचने से पहले उसको ब्लड के थ्रू जाना पड़ता है। पहुंचने से पहले उसको मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से जाना पड़ता है, क्यों, तो मेटाबॉलिज्म मेडिसिन जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से इसका मेटाबॉलिज्म करके इसको सिंपल वन में कन्वर्ट होगा, और लीवर के थ्रू ये वेरियस पार्ट्स में जाएंगे जहां पर इसके रिक्वायर्ड थेरापेटिक एक्शन है। एट द लास्ट जो रॉ मटेरियल बच जाएगा, ओके, तो वो मटेरियल जो है थ्रू द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन भी एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी के बाहर, या फिर एक्सक्रीशन थ्रू द एनस भी होगा, ओके। तो कोई ड्रग्स अगर जो, ओके, ड्रग्स अगर जो पेन किलर टाइप्स का है, तो जनरली इट्स मोर प्रोनाउंस ड्रग्स और विच इज अफेक्टिंग द किडनी, किडनी के पार्ट्स को वो अफेक्ट करते हैं, किडनी डैमेजिंग का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग्स का कुछ पार्ट, ओके, जो अनअब्जॉर्ब पार्ट है, वो पार्ट कहाँ जा रहा है फिर, थ्रू द यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये भी एक चांसेस है वहाँ पर, ओके। तो हमारा जो पॉइंट था कि हाउ द ड्रग्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड गिव एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग इट्स, तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, देखेंगे सिलेक्टेड पॉइंट। The process of the getting drug from its dosage form into the body is known as drug absorptions. The drug absorptions takes place by the passage of the drugs through the cell and an other biological membrane. Absorption is done by the passive diffusion and penetration through the cell membrane, which is related to the drug's lipid solubility. And there are some factors also which is responsible for the drug absorptions. That is the solubility of the drugs in the water or the fat. Okay, solubility is most important part. Okay, some of the drugs are soluble in water, some of the drugs are soluble in the fat. So this in turns the depends on the presence or the absence of the hydrophilic and the hydrophobic groups in the stomach. Okay, so hydrophilic and hydrophobic groups are there, which is facilitate the process of the dissolutions. Okay, then the crystalline form and the salt form of the drugs. It is also most important. Drugs are available in the crystalline form or salt form, so it is also help for the digestions, okay. Salt form and the crystallization forms, it depends upon the nature, okay, and the rate of the absorption is also affected, there is of the metabolism also affected, and then the result will also affected. For example, जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास कोडिन फॉस्फेट, ओके। तो कोडिन फॉस्फेट क्या है, इट इज मोर इजिली अब्जॉर्ब एंड इट इज मोर सोल्यूबल देन द सल्फेट। सल्फेट के कंपैरिजन में कोडिन फॉस्फेट इजीली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहती है, फास्ट रहती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एंटीवायरल ड्रग्स, ओके। अब देखिए एंटीवायरल ड्रग्स का मीन्स कौन से ड्रग्स होते हैं, ओके, कौन सी मेडिकेशंस है जो कि जिसको हम एंटीवायरल बोलते हैं, ओके। तो ये जनरली काय के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं,
क्योंकि जनरली एंटीवायरल ड्रग जो है वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, जनरली एंटीवायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिया जाता है। ओके, और एंटीबायोटिक्स किसके लिए देते हैं? एक तो वायरस या फिर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ओके, और जो एंटीवायरस यूज होते हैं वो स्पेसिफिक वायरस के लिए भी यूज होते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ओके, there are number of generations also, first generation, second generation, third generation। यहाँ पे इसमें भी जनरेशन, जैसा कि हम मोबाइल की जनरेशन देखते हैं 3G 4G 5G, उसी तरह से ड्रग्स के अंदर भी जनरेशन होते हैं। तो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जितनी जनरेशन उसके हाई रहेंगी ड्रग्स की, देन इट विल बी शो द हायर ओके इफिकेसी। जितनी इफिकेसी ज़्यादा रहेंगी उतना ही उसका रिजल्ट फास्ट रहेगा। तो जो कोई ड्रग्स अब ट्रायल एंड बेसिस पे काम होता है, डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, फर्स्टली लोअर ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन के ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन के, लास्ट में जनरली वो हायर जनरेशन के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में हायर जनरेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्यों? तो को बहुत सारे ऐसे वायरल डिसीजेस है जो कि आसानी से कवर हो सकते हैं। तो इसमें जनरली एंटीवायरल ड्रग्स में जो है एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। ओके, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? वो जो है वायरस को किल नहीं करते। ठीक है, एंटीवायरस वायरस जो रहते हैं वो जनरली किल नहीं कर किए जाते, बॉडी को मोटिवेट किया जाता है और बॉडी खुद से भी उसको किल करती है। ओके, तो एंटीबॉडीज क्या बॉडी में देने के बाद वो बॉडी जनरेट करती है एंटीबॉडीज, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करेंगी, और जनरेट करने के बाद वो एंटीबॉडी जो है वो वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन में क्या है, हम वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन खुद से जो है वायरस को खत्म नहीं कर रही है, वैक्सीन क्या कर रही है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप कर रही है, और वो एंटीबॉडी जो है बाद में अल्टीमेटली लास्ट में जो है वायरस को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो these आर द functions ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स आर द क्लास ऑफ द मेडिकेशन used especially for the treating or the controlling viral infections, like the antibiotics for bacteria. Specific antivirals are used for specific viruses. Unlike the most antibiotics, antivirals do not destroy their target pathogen. Instead, they inhibit their development. बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो उनको बढ़ने देते नहीं है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप भी कर देते हैं, स्टॉप करके बाद में प्रोसेस को खत्म करते हैं। इस तरह से भी बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स काम करते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स की बहुत बड़ी कैटेगरीज है, एंटीवायरल ड्रग्स की बहुत बड़ी कैटेगरीज है जिसमें वायरल डिसीजेस के लिए यूज होते हैं, जैसा कि वैक्सीन है। ओके, वैक्सीन भी कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे वैक्सीन आते हैं। अभी वैक्सीन को तो हम जो वे नोन है, अलग अलग टाइप के वैक्सीन हमारे पास भी अवेलेबल है। उसके बाद उसमें और क्या आता है, जेनरिक एंटीवायरस आते हैं। ओके, इंटेस्ट एंटीवायरस आते हैं। ओके, न्यूक्लियोसाइडिक आते हैं। तो ये बहुत सारे इसके एंटीवायरस के कैटेगरीज हैं। तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि व्हाट आर द एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शन caused by the microbes. Most viral infections such as self-limited and do not need any particular environment, that is the viruses such as the HIV, herpes, hepatitis and influenza, ये टाइप के वायरसेस है। आपको तो पता होगा, हमने एड्स डे सेलिब्रेट किया था, तब भी मैंने बोला था कि एड्स जो है HIV वायरस की वजह से होता है। तो HIV इज ऑल्सो वन ऑफ द वायरस। So antiviral drugs usually act by the inhibiting the growth or the development of the viruses, and antivirals are the relatively less harmful and are also specific in particular viral infections. तो ये था एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, मलेरिया क्या होता है, हाउ इट इज कॉज्ड। तो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द मलेरिया? डू यू नो एनीथिंग अबाउट द मलेरिया? मलेरिया किसकी वजह से होता है? हेलो, यस द सर। वर्ड मलेरिया, जी बोलिए। किसकी वजह से होता है मलेरिया?
The word mosquito. malaria is derived from the Italian word mal, and area means air. Okay, Maliane bad, area means air, bad air. The malaria is caused by the infection, okay, with protozoans parasites of the genus Plasmodium. So these parasites has two phases. They spend on a sexual phase in the man and a sexual phase in the female Anopheles mosquitoes. Okay, generally the mosquitoes are responsible for the malaria. Okay, out of several Plasmodium species, only four species infect the males. So Plasmodium falciparum, it causes the malignant, okay, torsion or the subtorsion form of the malaria, which may cause the death. Plasmodium vivax, it causes the benign torsion malaria. This is the most common form of the diseases. Okay, this the Plasmodium vivax is around us. हमारे आसपास में यही दिखता है प्लास्मोडियम वाइवेक्स, इससे जान नहीं जाती है लेकिन ये मोस्ट कॉमन है. Plasmodium malaria, this causes the cotton malaria of the intermediate severity, and Plasmodium oval, it causes the mild torsion malaria. तो ये मलेरिया के अलग अलग टाइप्स है. मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके, मलेरिया के जनरली रिस्पॉन्स है वेक्टर, और वेक्टर कैरी जो करता है जनरली हमारे पास मॉस्किटोज कैरी करते हैं. ओके, प्लास्मोडियम वाइवैक्स. तो व्हाट आर द सिम्टम्स? ओके, सिम्टम्स क्या क्या है मलेरिया के? कोई बोल सकता है मलेरिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? Severe chills and fever start and may repeat after every third or the fourth day depending upon the protozoa and the hence on the type of the malaria. Nausea, vomiting is caused as the liver is affected when the parasite enter the bloodstream and attack the erythrocyte. It is called as erythrocytic types of the malaria. So these are the examples. This is all about the absorptions and the types of the malarias.